Assalamu alaikum students, this is Shahnawaz Soomro and I welcome all of you here in my YouTube channel Nursing with Shahnawaz. Today we will start a new series of pathophysiology which will be according to the HEC syllabus. So starting with this introduction of pathophysiology which is the unit number 1. Nursing students के लिए pathophysiology is quite a different and difficult subject, but we will try to make it interesting as well easier. So most of the students कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं उनसे पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन तक पूछता हूँ तो दे सेड इट्स ऑल अबाउट द डिजीज़, जबकि इट्स इनकरेक्ट. देयर आर टू टर्म्स. वन इज़ पैथोलॉजी. पैथोलॉजी इज़ बेसिकली derived from the two words. Pathos means suffering, diseases, uneasiness, uncomfortness. Logy is about the study. So in pathology we study about the disease, about suffering, about disease patron, its types. मतलब डिज़ीज़ की नोयत के बारे में हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, जबकि पैथोफिजियोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ 3 words: pathos, physio and logy. Pathos means suffering, physio is about the nature or body. We can say it's body. Logy is about the study. It means that in this we study our body in the disease condition. It means कि अगर किसी को डिज़ीज़ हुआ और उस डिसीज़ की वजह से जितने भी हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस हुए, उनकी स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं. We can say that it is the study of disordered function in the diseases, or we can say that it is the study of disturbances in the normal function of the body caused by the disease. In simple words, we can define the pathophysiology is that how the disease affects on the functioning of the body. So it's all not about the disease only, but how disease impacts on our body, how disease impacts on our body in such a way that our normal function of the body is disturbed. Here we study about it. So इन सब चीज़ों में हमने डिज़ीज़ का पढ़ा, तो डिज़ीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वैसे तो अगर कोई पूछे कि डिज़ीज़ क्या है तो हम कह देते हैं कि जब कोई बंदा हेल्दी नहीं है तो वो डिज़ीज़ में है और वो डिज़ीज़ कंडीशन में से गुज़र रहा है. लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट वी शुड नो अबाउट इट्स डेफिनेशन इन अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट. Disease is basically dis-ease. It means uneasiness or uncomfortness. In disease, we study about its deviations from the normal structure and function of the body. Means if someone's normal function and physiology is so disturbed in such a way that it is manifested by a set of signs and symptoms, and it is properly diagnosed by the doctor, we call it he is facing disease. आपकी बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन इस तरह डिस्टर्ब हो कि उसकी रिज़ल्ट में कॉन्सिक्वेंसेस में साइन एंड सिम्टम ज़ाहिर हों और उनको प्रॉपरली डायग्नोज किया जाए तो हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड डिजीज़. इन सिंपली वी कैन से दैट डिजीज़ इज़ अपोजिट टू द हेल्थ. एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजीज़? जब भी कोई डिज़ीज़ होती है तो उसके चार इसके कंपोनेंट्स याद कर लें. इट इज़ अ प्रोसेस. सबसे पहले इटियोलॉजी. इटियोलॉजी इज़ सम हाउ वी कैन से द स्टोरी बिहाइंड द डिजीज़. कॉज. इटियोलॉजी इज़ द कॉज, बट आई कैन more differentiate it from the cause in a way that आप इस तरह समझें कि cause can be a single cause, but etiology एक इसके पीछे पूरी कहानी है. उसके बाद पैथोजेनेसिस, जिसके हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पढ़ते हैं कि अगर डिजीज़ हुई तो एक बड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, वो किस तरह होता है. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हम जो हमारे डिज़ीज़ की वजह से द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिज़ीज़ और एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉजिटिव एजेंट हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में चेंजेस आई हैं स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली, तो वो हम सारा कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में पढ़ते हैं. एंड इन द लास्ट वी
see here about the clinical manifestations, which is about the sign and symptoms of the disease. So here etiology. Etiology जो कि एक कहानी है. It is the course of the diseases. It can be divided into two, genetic and acquired. Genetic is concerned with the genes or defect in the genes. Here abnormality or disease is caused by genes defect. For example, abnormalities in the chromosomes can lead to many diseases. And acquired फिर हमारा बेड़ा गर्क किया होता है. For example, physical agents. There are physically, if someone can get injured, और किसी का एक्सीडेंट हो गया फिज़िकली, किसी का कट लग गया, दिस ऑल कैन लीड्स, किसका फ्रैक्चर हो गया, लीड्स टू द डिजीज़. केमिकल एजेंट्स हमारे बॉडी में बहुत सारे एसिड्स, अल्कलीज एंड केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जिसकी आगे पीछे इम्बैलेंसेस की वजह से बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हमारे जितने भी होते हैं वो अप एंड डाउन की वजह से इट कैन लीड्स टू मैनी डिजीज़. इन्फेक्शंस में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, fungi and parasites, these all can lead to many diseases. Abnormal immunological reactions, sometimes आपको पता है हमारी अपनी इम्यूनिटी हमारी दुश्मन बन जाती है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इज वन ऑफ द एग्जांपल. Psychological factors, there are a lot of psychological factors that can lead to the diseases. Here is the pathogenesis. It means कि disease की steps, what are the sequences or what are the events in the cells and tissues as the consequences of the causative agents. It means that from the initial step up to the final step we study here in the pathogenesis. Morphological changes means due to that causative agents, due to that pathogenesis जो sequence हो रहा था, obviously वो आपके cells और tissues पे morphologically, it means कि structurally and functionally impact करेगा और उसमें alterations आएंगी. In the last, we see here the clinical significances. It means कि as the consequences of the morphological changes, and this is also so obvious that अगर आपकी cells और tissues में जो changes आई हैं उसकी structure में और function wise जितने changes आए हैं, that will definitely lead to some sign and symptoms जो कि एक दिन वैसे ही ज़ाहिर होने हैं. इसके अलावा कुछ terminologies हैं. At the right corner I have written there about the diagnosis first. It means that what is wrong, what's going on is about the diagnosis. Means that diagnosis is to identify the problem or disease. Here in the simple words मैंने just concept लिखा है. For example, what is wrong is the diagnosis. What is going to happen will be the prognosis. Prognosis में हम further क्या इस चीज़ का होगा वो देखते हैं. What can be done about it is included in the treatment. What should be done to avoid is included in the prevention. Thank you for your attention. See you soon in our next lecture, which is about the inflammation.